this organ, that is the liver. So you see the liver, and it is the largest organ of the body. Weight is around 1.5 kg. Now our learning objectives means that what you learn from today's demonstration is different surfaces of the liver, borders of the liver, that means external features, different ligaments which are attached to the liver, then different anatomical marks present on the liver externally, then relations of the liver, both peritoneal as well as visceral relations, and some other miscellaneous questions which can be answerable at this moment of time. So this is the learning objective of today's practical demonstration. So first question of visually of the examiner is, put you this organ in anatomical position. Some books, some not books, some it's not well defined in your reference book or textbook. What is the anatomical position of liver? It's not written like that. So now it's a cumulative this knowledge. What different anatomists have mentioned what is the anatomical position. What they have mentioned is that we should focus on the right lobe of the liver. This is the right lobe of the liver. It's the main lobe of the liver. And it has 5 surfaces. Superior surface, anterior surface, right lateral surface, posterior surface, and inferior surface. As per the vision of that anatomist is that we should put anterior surface anteriorly, superior surface superiorly. That means this is superior surface. If I put superior surface like this, that means I am putting the superior surface posteriorly. That is not the anatomical position. You will get 0. You place it superiorly. Put the right lateral surface on the right side. Then put posterior surface posteriorly. I can put this surface like this, but then it becomes if I hold the liver like this, इसमें posterior surface आएगा inferiorly. That's again wrong position. I have to put posterior surface posteriorly and inferior surface inferiorly. So this becomes the anatomical position of the liver, and I hold it and I have to place this organ in the right hypochondrium, in the middle part of this one of the quadrant epigastrium, and left also hypochondrium. occupies a portion of left hypochondrium. So some said that you can pass this, that is the probe, through this opening. This opening is of the inferior vena cava. If I am passing through this opening like this, try to put it in a straight line. Try to put it in a vertical line. That is the anatomical position of the liver. That is the anatomical position of the liver. I'm now this leaving me back. Now this is about the anatomical position, quadrants. Then third question may be, sometimes examiner asks us what you are seeing, what you are observing, or what you are what you have been taught about the different external additional features. लीवर तो है ही, जैसे एंटीरियर सरफेस पे एडिशनल फीचर ये मिल रहा है हमें. बोलेगा व्हाट इज दिस, व्हाट योर टीचर्स हैव टॉट यू. आप बोलेंगे सर दिस इज falciform ligament. Question will be, what is this? Your answer will be, sir, this is a peritoneal fold. What is the function of this fold? Sir, it is sickle shaped fold of peritoneum and attaches the liver
with anterior abdominal wall, as well as superiorly it attaches the liver with the diaphragm. So it gives a support to the liver. Okay, so it will be like that. Then this is about anterior surface. Then on the superior surface, uh, you have to describe it. You can say it is convex, corresponding to the concavity of the diaphragm. This is concave. Why? Because heart is present in the middle part. It's a sort of impression to the heart, or cardiac impression, इसको इसमें पता है. And again it is convex. It's like that. Then there's some structure. What do you see? This opening. एक तो ये opening यहाँ से जो हम जहाँ से हमने इसको निकाला, ये फोर्स को निकाला, ये फोर्स. This opening, this is a different. This is for speed. inferior vena cava. देखो जी ये है inferior vena cava. तो उसके लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं ओपनिंग्स कुछ यहाँ पर. These are hepatic veins. They are intra not liver को क्या है, intrahepatic. They are present within the liver. ठीक है. जैसे हर किसी ऑर्गन का अपना आर्टरी होता है, अपना वेन होता है, इस तरह लिवर का भी है अपना वेन है. इसका क्या, नॉट पोर्टल वेन, हेपेटिक वेन, और वेयर दैट ओपन्स डायरेक्टली टू द इंफीरियर वेना केवा. ठीक है. दैट आल्सो होल्ड्स द लिवर. सो व्हेन वी कट दिस, इट कम्स डाउन. दे आल्सो फॉर्म द सपोर्ट टू द लिवर. ठीक है. तो ये हो गया हमारा सुपीरियर सरफेस. अब हम पहुंचे पोस्टीरियर सरफेस पे. पोस्टीरियर सरफेस पे हम यहाँ पर तो है कुछ नहीं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक एरिया है, इसका नाम पड़ गया कॉर्डेट लोब. क्या बन गया, CAUDAT, कॉर्डेट लोब. तो कॉर्डेट जो है, जब हम मेडिकल डिक्शनरी में देखते हैं, उसमें मीनिंग है रिलेटेड विद द टेल ऑफ द हॉर्स. समथिंग रिलेटेड विद टेल ऑफ द हॉर्स. ऐसा क्या चीज़ है इसमें कि जो टेल ऑफ हॉर्स के साथ रिलेट करता है? ऐसा इसमें क्या है, इसमें एक प्रोसेस है, ये वाला, नॉट नो कॉर्डेट प्रोसेस. This chordate process joins the chordate lobe with the right lobe. On this, some anatomists have said this is like a tail of the horse, and that on that basis it has been mentioned as chordate lobe. अब जब आपने आइडेंटिफाई किया इसको, इसकी बाउंड्रीज पूछी जाएगी. You can say that on the right side there is a groove for the inferior vena cava. On the left side, groove for ligamentum venosus. Superiorly it is continuous, and inferiorly yes. So this completes. Coming to the posterior surface of left lobe, nothing special about here. Now coming the inferior surface. inferior surface पे यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे इम्प्रेशंस. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर है. दिस इज गॉल ब्लैडर. तो इसके लिए नेचर ने अलग से फोसा एक रखा है लिवर में, गॉल ब्लैडर फोसा. लेकिन थोड़ा सा नीचे यहाँ पर होता है, ऐसे बाहर. तो ये बाहर वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं फंडस. ये हो गया बॉडी, ये हो गया नेक पार्ट्स ऑफ द गॉल ब्लैडर. यर शेप्ड नेक, बॉडी एंड फंडस. लेकिन अब यहाँ पर समझने वाली बात है, जब पेरिटोनियम ऐसे आता है, इसको लाइन करता है, जब वो इसको लाइन करता है तो these are lined by peritoneum, but the fossa of the gallbladder is not lined by the peritoneum. So that is why this is one of the bare area of the liver. ठीक है. या गॉल ब्लैडर का ये वाला सरफेस is also not lined by peritoneum, क्योंकि ये इसके साथ अटैच होता है, अपने फोसा के साथ अटैच होता है. लेकिन ये वाला सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस गॉल ब्लैडर फोसा का, इज लाइन बाय पेरिटोनियम. यहाँ से सिरोसा होगा, यहाँ से एडवेंटिशिया होगा, अगर हम हिस्टोलॉजी देखेंगे.
हाँ बोलियो बात बोला तो सॉर्ट बात बोलते हैं हो गया जी भाई ये खत्म एंड दिस इज देन उसके बाद गॉल ब्लैडर को सामने छोड़ा एक और एरिया आता है लीवर का तो जब हमने देखा हमने नहीं देखा जिन्होंने देखा एनाटॉमिस्ट ने उस वक्त उन्होंने बोला कि ये कोई ज्योमेट्रिकल फिगर के साथ इसका ये शेप है तो किसी ने कहा ये लगता है हमें क्वाड्रिलेटरल जैसा 4 साइड है इसकी तो रखा गया नाम क्वाड्रेट लोब अब बाउंड्रीज हमें बतानी है एक तरफ से है राइट साइड तरफ से फोसा या गॉल ब्लैडर लेफ्ट तरफ से है सुपीरियरली इंफीरियरली कंटिन्यू खत्म ठीक है। अब हम रिलेशंस पे आते हैं ठीक है नहीं पहले हम सरफेस समझे पढ़ा नाम पढ़ा सरफेसेस हम देखते हैं कि राइट लोब में सुपीरियर एंटीरियर सरफेस ये वाला राइट लैटरल सरफेस पोस्टीरियर सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस बट these surfaces मतलब और they are not we cannot demarcate them यहाँ से जहाँ तक है एंटीरियर सरफेस यहाँ से यहाँ तक कहीं आप पॉइंट नहीं डाल सकते दे आर मर्ज्ड दे आर सुपर इम्पोज्ड ऑन ईच अदर लाइकवाइज दिस superior surface and posterior surface there is not a well defined border and only well defined border is the inferior border which separates the anterior surface from the posterior surface from the inferior surface and this inferior border is extending up to the right side where it separates the inferior surface from the anterior and or inferior or posterior surface from the right lateral surface. Regarding left lobe it is flattened ये थोड़ा सा expanded portion है ये flattened है जो फ्लैटेड होता है उसकी दो ही सरफेसेस होती है एंटीरियर सरफेस पोस्टीरियर सरफेस ठीक है सरफेसेस बॉर्डर्स खत्म पेरिटोनियल रिलेशंस थोड़ा सामने पड़ा पोटा हेपेटिस अब हम पोटा हेपेटिस भी अभी पढ़ना है हमें पहले पेरिटोनियल रिलेशंस पूरा कंप्लीट करना है पेरिटोनियम में हमें क्या करना है कंप्लीट कि इट इज बेसिकली एन इंट्रापेरिटोनियल स्ट्रक्चर एक्सेप्ट सम एरियाज व्हिच आर नॉट लाइन्ड बाय पेरिटोनियम व्हिच आर कॉल्ड बियर एरियाज ऑफ द लिवर among the beer areas one area is called the beer area that means the beer area means a special focus has been put on area the beer area where is that जब हम देख रहे हैं कि पेरिटोनियम यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पोस्टीरियर सरफेस पे पेरिटोनियम here separates into two layers superior layer inferior layer of coronary ligament again they merge here as the right triangular ligament and which gets attached to the diaphragm but between these two layers they enclose an area which is not covered by peritoneum. This area is called the beer area of the liver and this area is in contact with diaphragm above the diaphragm this area is in contact with diaphragm. फिर हम देखते हैं पेरिटोनियम वहाँ से आता है लेकिन कुछ एरियाज को छोड़कर जैसे फोसा फॉर गॉल ब्लैडर और ग्रूव फॉर द इंफीरियर वेना केवा या फिशर फॉर ट्रांसवर्स फिशर यहाँ पर पोटा हेपेटिस होता है। जब रिलेशंस पे हम देखते हैं कि रिलेशंस आगे से तो आपको पता ही है क्या है एब्डोमिनल वॉल है उसमें फिर क्या है जिफिस्टर्नम है या रिब्स है यहाँ पर इम्पोर्टेंट रिलेशंस है कि कभी हमें लिवर बायोप्सी करनी पड़ती है या फ्लूइड निकालना पड़ता है या व्हाट एवर इट इज़ यहाँ पर हम अपर पार्ट में हम देखते हैं 3 रिलेशंस होती हैं एक तो है डायफ्राम एक आता है लंग
तो लंग यहाँ तक ही खत्म नहीं होता है, वो नीचे जाता है। जब एक्सपैंड होता है लंग, वो नीचे तक जाता है, तो यहाँ पर भी लंग आता है, पोर्शन ऑफ लंग, और प्लूरा भी आता है। ठीक है, अपर पार्ट पे 3 रिलेशन, डायफ्राम, प्लूरा एंड लंग। मिडिल पार्ट पे लंग खत्म, लंग अब 2 ही चीज, डायफ्राम एंड प्लूरा। लोअर पार्ट खाली डायफ्राम, प्लूरा खत्म, अब डायफ्राम, सिर्फ डायफ्राम। लंग पहले ही खत्म हो चुका था, अब खाली डायफ्राम। ये इसलिए याद रखना है आपको कि जब कभी आपको नीडल डालना पड़ता है, या to aspirate the fluid or some take the biopsy, you should know what are the anatomical relations. Suppose incidentally अगर